He will say to the soul, come out. And if it's a pious person, the soul will quickly come out of his body. And the angels, they will wrap the soul into a beautiful smelling cloth. And they will take him into the heavens. And they will knock on the first heaven. And the angels who are the guardians of the first heaven, they will say, who is it? And Malakul Maut alayhi salatu wasalam, he will say that we have bought the soul of so and so, the son of so and so. And the angels, they will say, Subhanallah, we know this person because whenever he used to do good, all his good deeds used to come from here. Go and take him. And the doors will open. They will pass through that door. They will go through the second, the third door. In the same way, they will keep on carrying and they will keep on climbing the heavens until they reach to the throne. And then they will hear a voice, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha taratan ukhra. That we made this person from the soil, take him back into that soil, meaning take him back into the grave, and we will rise him, we will raise him from the dead on the day of judgment. So फिर क्या होता है, उस बंदे की रूह उसकी कब्र में वापस लौटा दी जाती है. And then the angels, Munkar and Nakir, about them the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that they will have teeth, and their teeth will be so sharp and so big that they will be biting towards the earth, and they will come into your grave. और उनके बाल लंबे लंबे होंगे, and there will be fire and smoke coming out from their eyes and their nose, and these angels will come into your grave. Imagine, आज अगर ये लाइट बंद हो जाए ना और कोई ऐसी चीज अंदर आ जाए या कोई ऐसा बंदा ही अंदर आ जाए हमें डराने के लिए, प्यारे इस्लाम भाइयों, हमें कितना खौफ होगा. We'll be so scared. Imagine that these angels, when they both come inside your grave, how a person will feel at that time. क्या बंदे को तकलीफ होगी. And the angels, they will say, sit up. तो बंदा सीधा बैठ जाएगा और फिर सवाल शुरू हो जाएंगे. मन रब्बुका. और ये सवाल कोई नरमी के साथ नहीं होंगे. ये सवाल भी ऐसी मीठी जबान में नहीं होंगे. They won't be in a beautiful soft sound. These questions, they will be very, very fierce. And a person, he will be asked to reply to them. Man Rabbuka, what did you used to say about Man Rabbuka, who is your Lord? Ma Dinuka, what is your religion? Ma Kunta Taqulu fi haqqi hadha rajul, what did you used to say about this person? And at that time, that pious ruh, that pious soul, he will answer to all of the questions, and then he will hear a voice from the unseen that make his grave a garden of paradise, and let him sleep until the day of judgment. आराम से वो बंदा सो जाएगा और उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी. लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, on the other hand, जब काफिर की मौत का वक्त आता है और एक गुनहगार की मौत का वक्त करीब आता है, तो फिर क्या होता है? Angel of death, he comes with 70,000 angels. All the angels are standing around that person. He will see his relatives, he will see his friends, but he won't be able to call out to them. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that Malakul Maut alayhi salatu wasalam, he will say to his soul, come out. And the soul doesn't want to come out. Why? Because the soul knows that if I come out, I'm going to be deep trouble. And he says that the Malakul Maut alayhi salatu wasalam, he says, or dissatisfied soul, come out. Come out to the anger of Allah. The soul will not come out. And then he will put that stick with thorns inside his body, and then they will drag his soul out. And his soul will be wrapped around a cloth which will be smelling. And then his soul will be taken into the heavens. Dastak hogi, on the first heaven. The angels, they will say, who is it? And they will say that we have brought the soul of so and so, son of so and so. बंदे का नाम, उसके बाप का नाम लिया जाएगा. And the angels, they will say, we know this person. May Allah's curse be upon him. May Allah Azza wa Jal punish this person. Whenever he used to commit sins, his sins used to go from here. And then all the rest of the doors will open. And then they will hear a voice from the heavens, take him to that place. I made him from the soil. I will raise him up from there. And then his soul is put back into the grave. और फिर वही मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं सवाल के लिए. मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल. And the other, at this time, what will that person say? Hayhata, la adri. I'm sorry, I don't know. Who was your Lord? I'm sorry, I don't know. Ma dinuka, what was your religion? I'm sorry, I don't know. Ma kunta taqulu fi haqqi hadha rajul. The Prophet sallallahu alaihi wasallam will be present in the grave. What did he used to say about this person? Hayhata, la adri. I have no idea. I don't know. And at that time, they will hear a voice from the unseen that put fire into his grave.
उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, and then they will hear a voice that turn his grave into a hole of hell. क़यामत तक वो बंदा उसी कब्र में चलता रहेगा। ये प्यारे इस्लाम भाइयों, ये देखिए, we all going to go through that. It's up to us. We've got the choice. ला इकराहा फी दीन. There is no compulsion in religion. आपको कोई सख्ती नहीं है. No one can force you. आपको कोई कान पकड़कर मस्जिद में नहीं ला सकता. No one can bring you to the masjid. No one can force you to read namaz. No one can force you to fast in the month of Ramadan. आज बेशुमार इस्लाम भाई हैं, इस्लाम बहनें ऐसे हैं, नहीं रोजा रखते. रमजान के महीने they're smoking on the streets. They're drinking coke. They're eating. लाइब्रेरी में चुप चुप कर पीते हैं. यार हमसे क्या छुपेंगे आप? अल्लाह ताला से हया करो. Are you not scared of Allah? आज हम रमजान में रोजा भी है, नमाज तरावी भी हम पढ़ते हैं. जैसे तरावी से फारिग होते हैं गीबत शुरू हो जाती है. इमाम साहब ने आज ये कर दिया, आज बड़ी लंबी तरावी कर दी, आज इमाम साहब ने ये गलती की है. बस इमाम साहब को हम गीबत पर गीबत पर गीबत, और हम कहते हैं हमारा रोजा है. कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल says that those people who are fasting and then they do ghibat, he says that these people are like as if they are eating the flesh of their own dead brother. Would you like to eat the flesh of your dead brother? No, we won't. But that is a person who backbites. जो गीबत करता है, who backbites against his brothers. रोजे की हालत में, हम रोजे की हालत में झूठ बोलते हैं. हालांकि कुरान पाक में आता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन. Allah's curse be upon the liars. If we are still doing in the month of Ramadan. प्यारे इस्लाम भाइयों, it's time for us to change. This blessed night, make use of this night. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, Allah Azza wa Jall's mercy showers upon this night, upon the people. And then it says that until the day of Fajr, until the time of Fajr, the angels, they look for people who are asking for forgiveness. क्या हम अपनी माफी नहीं मांगेंगे? क्या हम अब भी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा नहीं करेंगे? Is it not time that we put ourselves into submission of Allah? أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. The Quran was revealed on this night. And the Quran says, is it not the time that people bow down on this Quran, on the command of Allah Azza wa Jalla? Guys, inshallah, we'll finish with these words. These nights, we might not have this night next year. क्या पता है? There are so many amongst us. आप शायद जानते होंगे, आपके साथ कोई इस्लामी बैठा होगा इस साल आपके साथ नहीं है, वो कब्र में. तो कल प्यारे इस्लाम भाइयों, हम अगले साल शायद ये भी कह सकें, फुला ने बयान किया था आज हमारे साथ नहीं है, या फुला इज्तिमा में आया था आज हमारे साथ नहीं है. तो इस मौत को प्यारे इस्लाम भाइयों हमेशा याद रखें. Always think about your death. Always think about the hereafter. बंदा जब मौत का तस्करा सुनता है, बंदा जब मौत के बारे में सोचता रहता है, तो बंदा गुनाहों से बचता रहता है. अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज फरमाए. आज की रात के सदके अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मुआफी फरमाए. और प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब फरमाए. मैं सिर्फ आपको एक ऐसा वाक़या, इबरतनाक वाक़या अर्ज करता हूँ कि आज का माहौल कैसा है. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says there will be a time that a person, he will wake up as a Muslim and he will go to sleep as a kafir. बंदा वो कैसे, किस तरह हो सकता है? You know, if you think to yourself, क्या, how? तो प्यारे इस्लाम भाइयों, आजकल अक्सर जो गाने होते हैं, म्यूजिक सॉन्ग्स, वो कुफरिया कलिमात होते हैं. उनमें जो गाने गाते हैं वो हिंदू होते हैं, वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं. लेकिन our brothers and sisters, listen to them songs. याद रखिए, किसी ने कोई ऐसा गाना सुना जिसमें कुफरिया कलिमात है. एक गाना है, उसका मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ कि इस गाने का शेर क्या है. उस शेर में ये था कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने हम कैसे जाने. अब यहाँ पर भी हुआ, ये किसने गाया? हिंदू था. और उसने क्या कहा? Even Allah doesn't know. How do we know? तो जो ये माने, whoever listens to that song and he likes that song and he likes the lyrics and he likes them, वो बंदा सुनने वाला भी काफिर हो जाएगा. लेकिन हमें पता नहीं है. We turn on our ignition, तो क्या अंदर चलता है? गाने चलते हैं. आप अब देख लें, अभी तमाशा देख लीजिएगा जब ईद का दिन आएगा. बल्कि प्यारे इस्लाम भाई, आप इस तरह कह लें कि रमजान, the शैतान is locked up in the month of Ramadan. लेकिन जब ईद का दिन आता है, हमारी हालत
our condition is like this that we are greeting the shaitan. आज शैतान तू इतना अरसा बंद था, आज हम तुझे खुश कर देंगे, ईद के दिन हम ऐसे ऐसे गुनाह करेंगे तुझे खुश कर देंगे। और ईद के दिन कैसे कैसे गुनाह होते हैं। आज से इवन ब्रदर्स जो कुछ एहतिकाफ में भी होंगे, कोई एहतिकाफ में भी, we went to a masjid and we saw brothers, they were signing एहतिकाफ and they were discussing which film, which cinema to go to on Eid day. आप एहतिकाफ में बैठे और डिस्कशन क्या हो रही है, ईद के दिन फिल्म कौन सी हमने देखनी है। यानी हमारे एहतिकाफ भी कैसे हो रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए कि हमारी हालत प्यारे इस्लाम वाली बहुत बिगड़ती जा रही है। अल्लाह करे कि मेरी भी इस्लाह हो, आप सब की भी इस्लाह हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।